Hi everyone, welcome to the channel. I know you guys have seen the thumbnail and you want to know कि कट ऑफ क्या रहता है। और इस एग्जामिनेशन में हमें क्लैरिटी ऑफ माइंड होना चाहिए कि भाई कितना मार्क्स हमें टारगेट करना है, कितने स्कोर तक में हमारे चांसेस हैं सिलेक्शन के। ऑल्सो बिफोर आई बिगिन टू टेल यू ऑल ऑफ दैट एंड आई ब्रेक द आइस हियर, प्लीज अंडरस्टैंड दिस दैट क्लैट कंसोर्शियम पहले 150 मार्क्स का पेपर कराता था, अभी 120 मार्क्स का पेपर कराता है। द रूल्स ऑफ द गेम हैज नॉट चेंज्ड बिकॉज जो भी टॉपर अगर क्वेश्चंस मैक्सिमम कर पाता था तो वो 130 135 क्वेश्चंस कर पाता था। 120 मिनट्स में 150 क्वेश्चंस करना आई थिंक वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, and all the more that is the reason why they have reduced the number of questions. So first things first, see, to reach a cutoff score, all right, to reach a cutoff score you need to have at least you can say 100 plus attempts. So ideal attempts would be 105. That is the posture that you should maintain, and that is the frame of mind you need to keep in your inside the process when you are going to attempt that particular paper on 3rd of December, because any attempt less than this would put you in a very friskier zone, very dangerous zone, and then you might not be able to just carry yourself off the edge, and you might slip off the edge because of your less number of attempts. So first things first, I mean to expose the trends and the analysis before you. So this is usually the pattern that we have seen, that in the past 4 years since the pattern has changed, and most of the toppers were able to score somewhere between 110 and 120. So you will find that 119 was to an extent, some of the websites have stated that 2023 was somewhere between 119, 2022 was somewhere between 116, so on and so forth, and all of that. But the point is that this is the score of just one person. Topper is, let's say, at 115. Then you will find the second rank to be at 109, 110 marks. The third rank would be at 107 or 106, so on and so forth. So this is the score of the topper, the highest score that goes in CLAT, right? Whereas if we talk about the top 100 ranks, which means that the NLSIU college जो है इसमें 120 सीट्स के आसपास होती हैं, तो टॉप 100 रैंक्स जो हैं वो 120 से 105 मार्क्स के बेसिस पे वो क्या होती हैं, खत्म हो जाती हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू रिमेंबर, दैट पहली जो 100 रैंक है वो तो मतलब 105 के ऊपर के स्कोर पे है। अब इस बार अगर हम एस्टिमेशन लगाएं तो हम यही कह सकते हैं कि डियर, अगर एनएलएसआईयू का ख्वाब है तो 100 मार्क्स लेके आओ। अगर और जनरल कैटेगरी के अगर हो तुम, जनरल कैटेगरी के अगर हो तुम तो 100 मार्क्स लेके आओ। ऐसा मत सोचिएगा कि रिजर्वेशन वालों को कुछ बहुत खास बेनिफिट मिलता है, बिकॉज रिजर्वेशन में भी 85 टू 95 मार्क्स पे ही आपको एनएलएसआईयू मिलेगा। मतलब जो जो एससी रैंक 1 होती है उसका स्कोर अभी तक मैंने कभी भी 92 के नीचे नहीं देखा है, तो 92 के ऊपर ही उसका स्कोर रहता है। मूविंग द नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 95 से 97 मार्क्स में जो एससी रैंक 1 होगी उसका स्कोर होगा। तो ये एक तरीके से पिछले 4 साल का जो 4 इयर्स का जो ट्रेंड है वो मैंने आपके सामने रखा है, 4 इयर्स के ट्रेंड को आपके सामने रखा है। अब नाउ यू वांट टू नो कि भाई आप किस कट ऑफ के ब्रैकेट में पहुंचने वाले हैं। तो ये चीज याद रखिएगा कि देखिए एग्जाम जो है डुएबल है कुछ हद तक। पहले मैं आपको बता दूं कट ऑफ बताने के पहले, बिकॉज ये जो स्कोर है ये फ्लेक्सिबल है। ये स्कोर जो है, ये जो आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, टेंटेटिव दे रहा हूँ, बिकॉज ये एनालिटिक्स और ट्रेंड्स के बेसिस पे दे रहा हूँ। बहुत कुछ चेंज हो सकता है ऑन द वेरी सेम डे। डिफिकल्ट अगर पेपर आया तो कट ऑफ जो होता है बहुत तेजी से नीचे गिरेगा, और अगर पेपर इजी आया तो अभी तक के जो ट्रेंड्स और एनालिटिक्स हैं वो पूरे के पूरे फ्लाउट हो सकते हैं। The entire compartmentalization of rank and scores can go into haywire if the paper is very easy, because everybody was able to do 120 out of 120 questions. And that is the biggest, you can say, roadblock. That is why most of the institutions are not providing the cutoffs, the trends of the cutoffs, because they don't want to take a chance. पेपर के बाद बताते हैं, बट मैं आपको पेपर के पहले बता दे रहा हूँ। पिछले 4 साल को कुछ कितना ही अंतर आएगा, ज्यादा अंतर आएगा तो 5-6 मार्क्स का अंतर आएगा, इससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं आने वाला है, ये मेरी गारंटी है। सो दिस इज द टेबल दैट यू गाइस हैव बीन वेटिंग फॉर, दिस इज द टेबल दैट यू वांट टू नो, दैट if let's say we want top 3 colleges, top 3 NLUs,
that is NLSIU Bangalore, Nalsar Hyderabad, and WBNEJS Kolkata, and you want to have a rank between 1 to 100, so your score got to be 95 plus. This is what you need to remember for the top 3 colleges. Your score has to be 95 plus. This is the trend that you cannot change. That has not changed so far. सो पेपर इजी आए, पेपर डिफिकल्ट आए, टॉपर्स जो होते हैं वो उनको फर्क उस चीज से बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है. सो 95 प्लस पे टॉप 3 जो हैं आपका बुक हो जाएगा. Moving to the next part, the remaining 5 colleges that are there, that is, let's say, again, not 5, but top 3 plus 3, that is 6 colleges. So that is NLU Gandhinagar, Jodhpur, and NLIU Bhopal. So you got to have score between 90 plus. Anyway, if you want to get into top 5, the score has to be 90 plus to be on a safer side. Top 5 will be there above 90. To an extent, let's say if the paper is getting difficult, what will the drop? 80 to 85 marks. So this is the bare minimum that you should score, right? But again, 80 to 85 marks, if you are scoring, then you will be in the top 1000, and then it might be the case that you might get next 4 colleges. Next 4. And I'm talking about top 2 lists which come into our hands in the first few weeks after the examination is done in the month of January itself, right? So that is what I call selection, because then you are free from the pressure. You don't have to wait till March, April, or May for your results or for your selections on colleges to be allotted and all of that. Most of the students in the top 2 are very much assured, and they start preparing for their boards examination, or they go on a vacation after this. So anyway, you see, I would say that 80 plus score would be on a very safer side for top 10 NLUs. And this particular trend is not changing since past 4 years. In fact, before even that, before the pattern has also changed, this was somewhere the trend itself. But the catch is that people were able to do more questions because it was not passage based, right? So anyway, top 10 means 80 plus marks, even if the paper is easier, even if the paper is difficult, slightly variation of 5-6 marks, not more than that. But if you want to get selected, and by selected I mean that there are 2200 students who are going to get inside National University from top to bottom in 26 NLUs. And if you want your name to be one of that, you have to have a score above 70 plus. Now, this is where the segment of students, categorization of students, comes to, you can say, a change. And this is the roadblock. So yes, NLSIU is definitely not easy, not made for everyone. And hardly, I would say, out of 500 students that I have trained this particular year, I can see only 2 or 3 faces. I'm talking about Uttar Pradesh. I'm talking about UP per se. I can see only 2 or 3 faces who have the potential that they can go beyond 90. Again, I would say that top 5 colleges, yes, chances are there that they might get, but I am not going to reveal the names because that does not make sense. But the competition is very, very, you can say, very wide when you carry these 3 marks. 70 to 90 के बीच में ये 20 marks में कट थ्रोट competition रहता है. 0.25 का भी अगर आपको नेगेटिव मिल रहा है तो आप करीब करीब 10-12 रैंक नीचे चले जाते हो. इस तरह का कुछ गेम यहाँ पे चल रहा होता है. और सेफ साइड पे रहने के लिए 80 प्लस के ऊपर जब स्कोर जाता है आपका, तो आप सेफ साइड पे रहते हो. विच मीन्स एक ऐसा बच्चा जिसका 5 सेक्शन जो है वो बढ़िया है और 3 सेक्शन जो है वो बहुत स्ट्रांग है, वो आराम से 90 अबव लेके आ सकता है. और जिस भी बच्चे का इंग्लिश अभी तक चैलेंज नहीं रहा है, वो आराम से, जिसका भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और बचपन से अंग्रेजी बहुत धुआंधार रही है, पढ़ने वाली इंग्लिश और लिखने वाली इंग्लिश, तो आराम से 90 प्लस के ऊपर स्कोर करेगा. So this is the trend and the analytics that is not going to change. So I am telling you beforehand only, because when you go into that examination hall and you're dreaming about top 5 colleges and you are only marking 80-85 questions, please understand that you are not in the race of top 5, because that is the score that you need to have. And on the other hand, you are attempting only 85 questions. So to get this score, you need to go beyond 105 attempts, and that then thereby you will be able to fetch this particular score.
So keep these trends, these analytics in mind before you attempt your paper, and I hope it helps. I'll see you guys in the next.